बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you'll be fine। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 8 आपकी पोम चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आया करे तो वीडियो को रिपीट करके देखा करें, बैकवर्ड फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखा करें, ताकि आपको जो है वो चीज़ क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो एस्पेक्ट्स को बयान किया गया है, तो ये पोम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। Children understand him, and only this has kept intact his pride and self-respect. Otherwise, he's a dry streambed living on memories and an inadequate pension and the hospitality now given revoked of his sons and daughters. So basically, students, this is a simple poem inside, but with a deep meaning inside. The poet talks about a person who turned old and is treated as worthless and valueless. He gets hurt the way he is being treated by his own kids, but the children that is mentioned in the title, in fact the grandchildren, love to play with him, hug him, and come to his lap and even kiss him on his scrubbed cheeks. This all hugging, love and kissing keep the inside of the old person alive and give a lift to his pride and ego. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वो कौन से बच्चे हैं जो अपने जो है वो बड़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन से मुराद है ये ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोती पोते नवासी नवासे मुराद हैं, यानी किसी भी ओल्ड पर्सन के अपने बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं, वो ही उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, उनके प्राइड को, उनके सेल्फ़ इस्टीम को बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं, उनके ज़िंदा रहने की वजह बनते हैं। वरना वो क्या है, एक सूखी हुई नदी की तरह हैं जो सिर्फ अपनी पुरानी यादों पर ज़िंदा हैं, जिनकी जो तनख्वाह है, जिनकी जो पेंशन है, यानी कि जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसको एक अमाउंट मिलती रहती है, तो वो भी नाकाफ़ी है उनके गुजारे के लिए। और जो हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी उनको पहले मिलती थी अपने बच्चों की तरफ से, आज वो उससे भी महरूम कर दिए गए हैं और अपनी ज़िंदगी वो सिर्फ अपने पोती पोतों के साथ गुजार रहे हैं। Then in the second stanza, an old man who must be humored and sent to his room when there are guests about, but always to be relied on to keep the children upstairs out of mischief. So in this second stanza, this talks about the inner situation of an old person physically as well as financially. The poet is of the view that when a father or a mother gets old, he or she becomes a burden for his kids. They are not warmly welcomed because they have nothing to share except some past memories and past recollections. Parents' memories cause boredom for them, so they are reluctant to host their old ones. तो यही होता है स्टूडेंट्स कि बच्चों के पास जो है माँ बाप के लिए टाइम नहीं होता, और उसका रीज़न यही है क्योंकि माँ बाप के पास अब देने के लिए पैसे भी नहीं हैं और देने के लिए कोई जॉय या एंटरटेनमेंट भी नहीं है। तो वो फिज़िकली भी वीक हो चुके हैं, फाइनेंशियली भी वीक हो चुके हैं, तो बच्चों को अब उनके पास बैठने में मज़ा नहीं आता। और ये किन बच्चों की बात हो रही है? उनकी अपनी औलाद की बात हो रही है कि बच्चे अपने माँ बाप से उस एज में दूर होते जाते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों, तो तुम उनको उफ़ तक मत कहो, उनके लिए नरम बाजू बिछाओ। तो बच्चों, इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है, इतना प्यारा दीन है कि उसने हमें माँ बाप के हुकूक़ तक बताए हैं, हर एक के हुकूक़ बताए हैं और माँ बाप के हुकूक़ बहुत ज़्यादा बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ पर शिर्क की बात की कि शिर्क मत करो, तो अल्लाह ताला ने वहीं पर माँ बाप के हुकूक़ में बयान किए कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई है, रब्बिरहमहुमा कमा यानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह दोनों पर रहम फरमा जिस तरह के उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया था। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हमारे माँ बाप हम पर बचपन में रहम ना करें और जब हम पैदा होते हैं हमारे बचपन में वो हमें बेयारो मददगार छोड़ दें, तो क्या हम इतने बड़े हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारे साथ शफ़क़त का मामला किया, इसी तरह हमारे अल्लाह ताला ने हमें सिखलाया है कि हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ, जब उन्हें खाने में भी तकलीफ़ होती है, जब उन्हें उठने बैठने में भी तकलीफ़ होती है,
جب انہیں بولنے چالنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کے پاس سوائے میموریز کے خزانے کے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے اوپر لٹا چکے ہوتے ہیں، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی پوری جو ہے وہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر لٹا چکے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کا پہلو یہ ہے کہ آج اولاد کے پاس نہ ان کے لیے ٹائم ہے اور نہ ان کے پاس جو ہے ماں باپ کو دینے کے لیے دو میٹھے بول ہیں۔ تو اب یہاں پر لیکن جو ہے پوئٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک اچھا پہلو یہ اولڈ پیپل کی لائف کے اندر باقی ہے، اور وہ پہلو ان کے گرینڈ چلڈرن ہے۔ کس طرح؟ یس they understand him from man roar and friendly punches to the chest and damp kisses on his scrubbed cheeks, they sail to the harbor of his knees. So in this last stanza, the poet further points out the loathsome attitude of people towards old family members. He says that the old persons always avoid it. If there are some guests around, the old father sent upstairs for two reasons. First, he may not come in contact with visitors. Second, his only usefulness is that he can keep the kids away from the guests just to avoid making a mess. But he is happy with his grandchildren as they become the reason for his happiness, his pride, his self-esteem, and his self-respect. They hug him, play with him, swing in his arms and laugh, punch him on his chest, and above all, kiss him on his rough skin. It all gives him pleasure and give him reason to forget what his own children are doing to him, and he forgo what is happening with him now. تو اب کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ بچوں کے اوائڈ کرنے کے باوجود جب ان کے گرینڈ چلڈرن، جب ان کے پوتی پوتے، نواسی نواسے ان کو جو ہے سمجھتے ہیں، ان کو آ کے پیار سے جو ہے تھپ تھپاتے ہیں، ان کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہیں، ان کے لیپس میں گھس جاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کی جھریاں لٹکی ہوئی جو اسکن ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ لٹک گئی ہے، اس اسکن کے اوپر بھی وہ پیار کرتے ہیں، ان کو ہگ بھی کرتے ہیں، ان کو کس بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، کچھ اپنا سناتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ان بوڑھے لوگوں کو زندہ رکھتی ہے، اور یہی اس پوم کا ٹائٹل ہے، دا چلڈرن انڈرسٹینڈ ہم، یعنی بچے اپنے بوڑھے دادا دادی اور نانا نانی کو سمجھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ پوم ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اسٹوڈنٹس، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے لیے نرم بازو بچھائیں، اور جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کا جتنا بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے اچھا لیسن سیکھا ہوگا اور آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوم بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو ٹل دی اینڈ. پلیز ہٹ دا لائک بٹن ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.